Hello everyone, hope you are doing good. Today we are going to learn some Excel formulas. तो आज हम लोग कुछ Excel formulas सीखेंगे जो it will help in daily work life. जो common formulas है, so let's start. First, average and sum value. So coming to average and sum value. Suppose purchase and sale, there are some purchase value and sale value. कुछ sale value and purchase value है. You want the average of 6 day sale or purchase. 6 days sale or purchase equal to average and total select the sales, and for sum equal to sum के लिए लिखेंगे equal to sum, then select all the sales and you will get the average and sum value. So you can see the average value is 499 and sum value 2995. Simply copy paste the same for sale also. Total value 2733 and average value 455. नेक्स्ट फॉर्मूला है ABS. क्या करते हैं हम लोग, जो नेगेटिव वैल्यू है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है और पॉजिटिव पॉजिटिव में ही रहेगा. वी आर कन्वर्टिंग दिस नेगेटिव इन पॉजिटिव वैल्यू. इन दैट केस क्या फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला, इक्वल टू ABS, देन सिलेक्ट द सेल. सिलेक्ट करना है, पॉजिटिव पॉजिटिव में ही रहेगा. सो यू कैन सी नेगेटिव वैल्यू कन्वर्टेड इन पॉजिटिव. देन कमिंग टू एंड फॉर्मूला. सो एंड फॉर्मूला में क्या होता है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स मिलता है. अगर आपका क्राइटेरिया वाइज ये मैच होता है तो ट्रू होगा, अगर नहीं मैच होता है तो फॉल्स होगा. सो फॉर्मूला देंगे AND फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन इक्वल टू 100, कॉमा सेकेंड नंबर इज लेस देन 800 and bracket close. So it's coming to, if I change the criteria, मैं अगर change करता हूँ criteria, then first is greater than 100, 200 is greater than 100. If I change this one as greater than 300, greater than equal to 300, the criteria is not matched. 200 is less than 300, that's why it's not coming. So second criteria, if I want to change, so keep is 100, so it's matching. Then if I change this one also, it's less than 400, so it's coming false, just because of we given the criteria 400. हम लोग क्राइटेरिया दिया 400 लेस देन, लेकिन ये 500 सेकेंड वाला जो है तो 500 है, it's greater than 400, so it's coming false. Then coming to count if. सपोज आपके पास कुछ आइटम्स है, यू हैव प्रोडक्ट टाइप और एनी आइटम्स एंड यू वांट टू सी द टोटल काउंट फ्रॉम दैट सेल. मॉनिटर इज कमिंग, मॉनिटर 2 टाइम्स. मॉनिटर कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है. तो माउस 3 टाइम्स, तो 3 बार आ रहा है. एंड कीबोर्ड, इन दैट केस वी कैन यूज count if. Count if, then backend open and select the particular range, then comma and the item or product type, particular product type, bracket close. So it's coming 2 times, copy and paste here. But in that case the cell range will be changed. आप देखोगे मैं फॉर्मूला बार पे क्लिक करूंगा, इट्स चेंज. इन दैट केस वी हैव टू फिक्स द रेंज. हाउ टू फिक्स द रेंज,
you need to add dollar sign और डॉलर साइन देके आपको फिक्स करना है रेंज। मैं दिखाता हूँ, let me show you. If you copy paste the same, you can see the range is fixed. तो ऐसे आप काउंट टिप लगा सकते हो। Going back to second one, summary sheet, then count sum. Count sum बहुत easy है. It's a very easy formula to calculate count and sum. We have some branches in areas or location, and you have some item. And you are a dealer. Suppose you are a dealer. आप dealer हो and कुछ item आपने sell किया location base store पे. So you are a dealer suppose, and you have some store area. You want to see कि कहाँ पर कितना काउंट सेल हुआ है एंड सम वैल्यू एज वेल. सिंपल काउंट formula is count and this. I sold the item monitor in 4 location, but for mouse 1 2 location. In 2 location I sold the mouse. For keyboard as well 3 location. For sum के लिए क्या करना है, equal to sum, then select the range 325 this. कोलकाता लोकेशन पे माउस सोल्ड हुआ है 225 एंड माउस 100, मॉनिटर 225 एंड total sum is 325. There is one formula if you want to see when not sold the item. If you want to see the blank count, you can also calculate the blank count, like count blank, then select the particular sales. So copy paste. इधर यू कैन सी, इधर आप देख सकते हो सिंपली कि चारों लोकेशन पे हुआ है, सोल्ड फॉर ऑल द 4 लोकेशन, दैट्स व्हाई इट्स कमिंग 0. बट हियर फॉर माउस 2 लोकेशन पे हुआ है एंड 2 ब्लैंक, सो कमिंग 2. एंड यहाँ पर 3 लोकेशन पे हुआ है, 1 लोकेशन पे नॉट सोल्ड, दैट्स व्हाई द ब्लैंक इज कमिंग काउंट 1. देन कमिंग टू ट्रिम फॉर्मूला. क्या ऑब्जेक्ट है इसका, क्यों करते हैं हम लोग. सपोज यू हैव सम नेम और डेटा एनीथिंग एंड सम स्पेसेस आर देयर, यू कैन सी स्पेस. कुछ आपके पास टेक्स्ट है जिसके मिडल में स्पेस है, सो यू कैन रिमूव द स्पेस बाय यूजिंग ट्रिम फार्मूला. ट्रिम फार्मूला यूज करके आप ये स्पेस हटा सकते हो. इक्वल टू ट्रिम, TRIM, trim, bracket open, then select the particular cell, copy and paste. But ये middle से space नहीं हटाता है. It will not help you to remove the space from middle of the text. Only आगे पीछे है तो before and after, if there is any space it will remove. And बहुत सारा cases में क्या होता है, अननेसेसरी कुछ साइन आता है टेक्स्ट फाइल में, ये वो भी रिमूव कर सकता है, बट लिमिटेशन है इसमें ट्रिम में. सो आप देख सकते हो, अगर इसको आप कॉपी पेस्ट करोगे, इफ यू कॉपी पेस्ट दिस, देन रिमूव्ड, स्पेस इज रिमूव्ड. ओके, दिस वन. देन गोइंग बैक टू नेक्स्ट फॉर्मूला विच इज सीलिंग. सीलिंग में क्या करते हैं हम लोग, राउंड अप फिगर करते हैं. So let me show you how it will work. Equal to CILLING, ceiling, and select the particular cell. Sorry. And then round up number.
ILING, sorry, selling. तो एज यू कीप जीरो, तो इसीलिए जीरो आया। तो आप एक डेसिमल में करना चाहते हो, मतलब एक डेसिमल में नहीं, एक नंबर पे, सो 10.11 एंड यू वांट टू राउंड अ वैल्यू 1, सो ये डायरेक्ट 11 हो जाएगा, इट विल कम डायरेक्टली एज 11। इफ यू वांट टू चेंज एज अ 2, सो 10.4 ये हो जाएगा आपका 12, नेक्स्ट वाला। Then coming to concatenate or merge. So it's already tested. In two way you can merge those item or product. First one is a formula concatenate and comma first text comma second text. So it will merge. दोनों को एक साथ merge करना है, तो you can use this formula. And in other way you can merge like this, first text and second text. So ऐसे भी आप merge कर सकते हो. So going back, then dated में आप क्या कर सकते हो, इसको डे में कन्वर्ट करना है, डेज में आप कन्वर्ट कर सकते हो, मंथ में कर सकते हो, एंड ईयर में भी आप कर सकते हो। तो कैसे करें, हाउ टू डू, इक्वल टू dated if from comma to date, एंड आपको डेज में चाहिए, इन डेज comma 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 invited comma days invited comma close, then okay. The date difference is, first date is 1st February 2023 and you have the end date 31st of December 25. In that case, if I want days difference or in between days, how many days are there, so you can directly calculate that. अगर आपके पास फर्स्ट टू डेट है एंड एंड डेट है, इन दैट केस आप अगर चाहते हो डेज कैलकुलेट करना, तो डेज इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। एजिंग कैलकुलेशन में या फिर बात डेट कैलकुलेशन, ये सब कैलकुलेशन में ये फॉर्मूला लगता है। अभी हम लोग देखेंगे मंथ कैलकुलेशन में, जस्ट नीड टू चेंज द डी टू एम, द मंथ, हाउ मेनी मंथ are there in between. And year में करना चाहते हो, if you want to see in year, then change as y, okay, 2 year 2022 3 to 25 आपका 2 years होता है। then coming to today's formula, it's simple. If you want to see today's date, by formula equal to today bracket open bracket close, and also if you want to the time as well with the date के साथ, आज का डेट के साथ टाइम भी चाहिए, so now formula is equal now and bracket open bracket close. Coming back to the month year, equal to days day, then ये आपको ये डेट का जो फर्स्ट डे डे है ना, वो दिखा देगा, इट विल शो और कैलकुलेट द फर्स्ट डे. And for month, if you want to see the month, equal to month month, then click the particular cell. So आपके पास ये जो month है, it will come, and year then particular cell, ये आ जाएगा आपके पास year.
days, month and years. Some dollar. You have some values or value you want to add dollar sign for those values. It can be possible by formula. A simple formula dollar bracket open the particular cell value, it will convert. So dollar sign you can see is okay. Due date calculation. It's a very usable formula for aging calculation. आप लोग इनवॉइस रेज करते हो या बर्थडे कैलकुलेशन करते हो तो उस केस में ये फॉर्मूला यूज होता है. सपोज आई हैव रेज वन इनवॉइस ऑन डेटेड दिस. मैंने कुछ इनवॉइस रेज किया था ये डेटेड एंड टुडे आई वांट टू सी द एज कैलकुलेशन और ड्यू डेज कितना दिन का पेंडिंग है, पेमेंट नहीं आया सपोज. सो इन दैट केस डायरेक्टली यू कैन यूज द टू डेज फार्मूला, इंक्लूड द टू डेज फार्मूला. आप इंक्लूड करके वो निकाल सकते हो. इक्वल टू dated if this, so start date form date you can say, and equal to today, then bracket open bracket close. Then if you want to see in days, bracket comma d, invoice is pending for 9219 days. Okay, let me change the range और the selected cell, मुझे selected cell change करना है and month, इतना month के लिए pending है, and year similar way. So you need to change the selected cell and year equal to y 25 years. Okay, now e-dated में क्या होगा, ये जो डेट है ना, आप चाहते हो 5 मंथ और 5 मंथ बैकवर्ड और ऑनवर्ड. सो e date, then select the form date and comma. You can see the date is 1st of February. आप देख सकते हो ये 1st of February है एंड 5 मंथ आगे किया तो ये आगे हो गया, तो ये आ गया आपका जुलाई. ओके, सो आप बैकवर्ड करना चाहते हो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप द फॉर्मूला easily. So for this 31st of December, and if you want to calculate backward 2 month, so October. Okay, next is यो मंथ. ये क्या होता है, ये क्या होगा, ये बैक भी करेगा और उसके साथ लास्ट डे ऑफ द मंथ आ जाएगा इस कैलकुलेशन में. व्हाट विल हैपन, this will move to that month, but it will also come as last day of the month. So eo month, month bracket open first form date comma then number of days. So you can see, just copy paste this one. So 1st February एंड ये तो जुलाई शिफ्ट हुआ ही है 5 मंथ. सो उसके साथ लास्ट डे ऑफ द मंथ वी आर गेटिंग लास्ट डेट और लास्ट डे 31st. देन कमिंग टू फाइंड, यू हैव सम टेक्स्ट, आपके पास कुछ टेक्स्ट है एंड यू वांट टू सी दिस लेटर वेयर इट्स स्टार्टिंग. सो कहाँ पर है, कौन सा मतलब लेंथ पे है. एले आपका इस टेक्स्ट में एले, तो एले ये टेक्स्ट में स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 आई थिंक. सो लेट्स सी इक्वल टू फाइंड, then find the text which one you want to find, then the text.
from where you want to find. So you check that one, 7th length and 5, and A is starting from 5 length. Then coming to if formula. If formula is a very usable formula. Suppose I have some fixed rate to bill to any of the company or area. You can see A को बिल करना है मेरे को 650, B को 700 and C को 625, and actual billed we have sent, ये फिक्स रेट है. Suppose you have some company or areas and you have some fixed value to build to that area or company, but you build this one, आपने बिल किया ये, तो 650 मेरा रेंज है कि 650 बिल होगा, बट यू बिल्ड 750, आपने 750 बिल्ड किया है, एंड 700 मेरा बी के लिए है. फॉर बी 700 इज ए फिक्स रेट एंड 600 आपने किया है, एंड सी को 625 एंड कुछ भी बिल नहीं किया. फॉर सी यू not build anything. In that case you want to see, in that case formula, you can use the formula equal to if this column first equal to, ये वाला पहले देंगे हम लोग क्राइटेरिया, इक्वल टू ब्लैंक, देन मेरा रिमार्क्स आएगा नॉट बिल्ड. ओके, इनवाइटेड कॉमा क्लोज, देन कॉमा, देन सेकेंड क्राइटेरिया. सेकेंड क्राइटेरिया फर्स्ट वन के लिए देंगे, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो. if bracket open, this column greater than this, equal to, मैं रखता हूँ ओवरचार्ज. अगर ज्यादा है तो चार्ज, इनवाइटेड कॉमा क्लोज एंड कॉमा. एंड थर्ड क्राइटेरिया अगर कम होगा तो इफ दिस वन इज लेस देन दिस वैल्यू, देन वी नीड टू पुट इक्वल टू if this column less than this, in that case comma undercharged or discounted, that you can keep other comment as well. So overcharge, let me try for all the criteria. See, yes, 750 we build which is greater than 650 fixed rate. 750 650 से ज़्यादा है तो ओवरचार्ज आ गया ऑटोमेटिकली बाई फॉर्मूला, एंड 600 700 से कम है तो अंडर चार्ज लिख दिया, एंड इस पे बिल नहीं हुआ, देयर इज नो वैल्यू, सो इट्स नॉट बिल्ड. इन दैट वे यू कैन यूज द इफ फॉर्मूला. ये और एक फॉर्मूला दिखा देता हूँ इफ का. सपोज यू हैव सम डेटा लाइक दिस, ये पीबोर्ड में ज़्यादा आता है ऐसे डेटा, तो पाइवट जब आप करते हो, बट you want to fill this one blank column as well, that UK want here also UK and here also UK, for US USA. So continuation, you can give the formula equal to if this column equal to blank. अगर ये कलम ब्लैंक रहेगा तो ऊपर का सॉरी कॉमा this, otherwise this. तो ये जीरो आया लेकिन बाद में फिल हो जाएगा आई थिंक. लेट्स सी, या ये फिल हो गया आपका, क्योंकि मैंने फॉर्मूला दिया लाइक दैट. ये अगर ब्लैंक है तो ऊपर का लेगा सेल, एंड अगर नहीं है तो जैसे इस केस में नहीं है, ब्लैंक नहीं है, यू कैन सी एक ब्लैंक, तो ये ले लेगा ऑटोमेटिकली. दो क्राइटेरिया से मैंने ये चेक कर लिया. नाउ एंड इफ
ये थोड़ा सा फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा. You need to see carefully this one. So you have some region and performance criteria and commission criteria. Okay, and for sample data you have some employee region and performance, their performance. So you want to calculate the commission. ओके, तो ये क्राइटेरिया वाइज मीट करेगा तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन परफॉर्मेंस, दिस वन. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. सो आपको एम्प्लॉय ये जो है जोन जोन जोनल सेंट्रल एंड जोनल, नॉट जोन, जस्ट लेट मी चेंज दिस वन. एक बार चेंज कर लेता हूँ जोनल एंड सेंट्रल. Okay, so formula is, check this one very carefully. So I need to give two criteria. One is region wise and as well as the performance wise. Okay, so first criteria, what is central and greater than 500. Okay, so A and D, if and region, this one equal to central and inverted comma close, then comma performance. I need to click this one, G6 greater than 500, first criteria. Then what it would be, then bracket close and comma, what it would be, it would be performance के ऊपर into what is the commission percentage, 20%. So 20%. Okay, second criteria, you need to give the second criteria. First criteria को copy करूंगा मैं. Let me copy this first one and second. So only changing the criteria. So if and F6 equal to central, so वो central ही रखेंगे. To put greater than equal to 300. तो क्या होगा, फर्स्ट में 500 है तो फर्स्ट दिया तो 500, तो उसमें ही पिक कर लेगा. तो ये ग्रेटर देन 300 इक्वल टू दिया तो वो 300 इक्वल टू एंड ऑटोमेटिकली इट विल पिक लेस देन 500 बिकॉज ये मैंने पहले ही दे दिया 500. तो 500 के पहले जो आएगा पिक कर लेगा एंड सेकेंड ग्रेटर देन 300 इक्वल टू को पिक कर लेगा. एंड कमीशन इज 15%. Sorry, percentage. Then third criteria, let me copy this one and paste it here. And third criteria is zonal, this one, zonal, and this one also would be third criteria as per this. And what would be 16%. And fourth and last criteria is this one. So let me zonal greater than equal to 300 and it would be 10%. Okay, then comma 0 bracket. Oh, if I copy this same and paste for all the formula, why it's coming 0?
ओके ओके, परफॉर्मेंस जीरो तो आएगा ही क्योंकि ये 200 है, विच इज लेस देन 300। तो लेस देन 300 का हम लोग फॉर्मूला नहीं लिया, ये क्राइटेरिया मैच नहीं करेगा तो जीरो आएगा। इन दैट्स व्हाई इट्स कमिंग जीरो। तो ये जितना भी 300 के नीचे है वो, सो इफ आई चेंज दिस वन एज 350 then it will come 35, 375 or 450, 375 then 450 central. If you check manually, it's matching with zonal and this one greater than 500 criteria. It would be 16% of 600, ये 600 के ऊपर 60% होगा, 16% 96, which let me check this one as well. This one matching zonal performance 350, zonal 350, 10% of performance, so 10% of this 350 equal to 35. It's coming correctly also. Let me check central one, central 375 central, this criteria is matching, so 15%, 75 into 15%, which is 56.25। and central का मैं दिखा देता हूँ greater than 500, so this one, suppose if I change this 700, so 140, this criteria is matching 20% of 700 equal to this into 20%, so it's coming 140, it's coming correctly. राइट लेफ्ट एंड मिड वैल्यू, सो आपको कुछ लेफ्ट वैल्यू चाहिए और राइट वैल्यू चाहिए और मिड से कुछ टेक्स्ट या वैल्यू चाहिए, यू कैन पिक। सपोज मुझे चाहिए, और नंबर से भी होता है, ये डी आई फर्स्ट टू डिजिट और टू टेक्स्ट लेटर चाहिए। इन दैट केस इक्वल टू लेफ्ट, देन सिलेक्ट दिस वन कॉमा टू, अब 2 3 कुछ भी आप यू कैन पिक। अगर राइट वैल्यू चाहिए देन चेंज द फॉर्मूला एंड सिलेक्ट द रेंज फर्स्ट, दिस वन, एंड इसका आपका 3 चाहिए लास्ट का, तो इफ यू वांट 3 letters from the text, last 3 letters or right side, right, yeah, UNT, एंड आपको चाहिए CO मिड से, इन दैट केस 2 डिजिट है एंड ये स्टार्ट होता है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4, 4 नंबर से। इन दैट केस इक्वल टू मिड, select the particular text, comma, starting from 4, and how many letter you want, 2 letters, CO, so it's coming. In that way you can find any of the letter or text. Okay, going back to length, you have some text and you want the length of the text, तो आपको text का length चाहिए equal to length, and select the particular text and length for this 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so 9 length, सबके लिए length आ जाएगा, it will come max and min, max value, and if you want to find the maximum value from the selected cell or maximum date, higher side date and lower side as well, or minimum value. Okay, for max value equal to max and select the range, so 350 is the higher side, yeah, copy and paste,
So it's in text format. You can change the format of date. So which one is latest, or this one 26, otherwise all are old dated. For lower value, equal to min, then select all the range of value. Yeah, minimum value is 100. You can see 100, and the date, I'm changing the date format. So old dated is 2017. Then coming to राउंड ऑफ वैल्यू. सो इसमें क्या होता है, आपका राउंड ऑफ वैल्यू जो होता है डेसिमल वैल्यू, वो चेंज होता है डिजिट वाइज. ओके, सो लेट्स सी. इक्वल टू ROUND, राउंड अप, राउंड अप, then actual value, then the round up number. So let me show you, just copy paste this one. See, you can see 10.28 and your round up number is 0. In that case it will come 11. Suppose 10.28 and you want to round up by 1. इस केस में आपका ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, डेसिमल के बाद वो राउंड अप हो जाएगा आपका नेक्स्ट डिजिट पे. देन ये केस में 2 डिजिट पे अगर करना चाहते हो, इफ यू वांट टू चेंज द सेकेंड डिजिट, डिजिट के बाद जो नंबर है, सो 29 कन्वर्ट 28 टू 29 हो जाएगा. देन रैंक कैलकुलेशन. ओके, you have some student and on the basis of mark you want to calculate the rank. वो आपके पास कुछ स्टूडेंट है, उसका ये उसका रिजल्ट है, नंबर है, एंड आप अगर उसका नंबर वाइज रैंक कैलकुलेट करना चाहते हो, रैंक देखना चाहते हो, यू कैन ऑल्सो. ओके, इन दैट केस इक्वल टू rank bracket open, then particular value, comma, select the range, total value range. ओके, एंड ये जो रेंज है आपको फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो वो मूव हो जाएगा. तो बाय डॉलर फिक्सिंग द रेंज, या 98 is higher side, that's why it's coming first, and 59 lower side is coming fifth. In that way sequence wise you will get the rank. आपको मिल जाएगा ये सीक्वेंस के हिसाब से रैंक. Substitute, you have some text and you want to replace some text or letter from the existing text. आपको replace करना है कुछ, जैसे ABC. Suppose ABC, you want to replace or remove the ABC and add new text. Okay, so you can use this formula. In that case, equal to substitute bracket open text, comma, full text which you want to remove, जो आपको remove करना है, and then comma, new text you want to add. Yeah, you can see ABC from this text removed, which I wanted to remove ABC, and added this hello. So DEF सेम है आपके, बाद में सिर्फ रिमूव हो गया ABC एंड ऐड हो गया hello. सम प्रोडक्ट. ओके, सम प्रोडक्ट क्या है, मल्टीपल है, सिंपली सारा प्रोडक्ट का आपको मिल जाएगा कितना इनटू करके, sold or purchased something. So you have some fruits and sold quantity,
selling quantity and price per kg, you can say. And if you want to see the sum of value sold, in that equal to sum product sell per kg, and then uh, it will come same. Okay, some product sum. If you have some items in your store, आपके स्टोर में कुछ आइटम है एंड ब्रांचेस भी है, सपोज लोकेशन वाइज, लोकेशन और लोकेशन, स्टोर लोकेशन, and you want to see only for biscuit sold item value, not store wise, total basis में. On total basis you want to see particular item, the sell value was sold equal to sum if bracket open, then actual value comma the particular item, then comma the total, this one. So आप देख सकते हो, you can see the biscuit total value is 2400, and ice, and for chocolate as well 1200, it's coming. Then small value. So sequence rank wise आपको अगर चाहिए इसमें से कौन सा सबसे लोअर साइड में है और कौन सा हायर साइड में है, और मैक्सिमम वैल्यू और minimum value, in that case you can use this formula equal to small actual value and comma range, this sequence. So smaller side में क्या है सबसे 27, 27 is the smallest amount. In that case you have to fix the range. Okay, so सबसे highest ये है and सबसे lowest ये है. So उसी हिसाब से sequence wise आ गया. Text में, so you have some values and you want to convert in a specific format. आपके पास कुछ वैल्यू है, आप ये फॉर्मेट में लाना चाहते हो, इन दैट केस इक्वल टू टेक्स्ट, सॉरी this one, okay, and actual value comma required format. So you can copy paste this one or drag and drop. So you can see this number converted in the particular format. 40 मेरे को ये फॉर्मेट में चाहिए, पॉइंट 00 एंड 60 को चाहिए था डॉलर विथ 0067. I needed 6728 in 0 67. It converted in that way. And upper lower, who want to convert name in caps letter or small letter. So for caps letter equal to double P upper, then name, and equal to for lower LOWER, lower lower side. Okay, we look up simply.
It's also a usable formula. Suppose Steve sold this item, Abhi sold this Jason 300 Maddie Poca. Now you want to see the sale value only for Abhi and Jason. So at the rate, or mostly I use at the rate, but its formula is we look up same this comma this to this. The select the range, total range, comma 2 comma 0, because from name the sale value contain in second column. नेम के साथ ये जो वैल्यू है, मुझे वैल्यू लाना है, तो ये सेकेंड कलम पे है, ये नंबर 1 पे है, ये नेम, एंड 2 पे सेल वैल्यू. So comma, that's why comma 2 comma 0. Then I need to fix this one, range, total range, this one as well. Okay, so you will get the value. सेकेंड है एडवांस वी लुकअप. एडवांस वी लुकअप में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, पहले दिखाता हूँ फिर बताता हूँ. लेट मी शो यू फास्ट, देन विल अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला. ओके, व्हाई वी रिक्वायर दिस एडवांस फीचर्स. नॉर्मल क्या करते हो आप वी लुकअप में, suppose you have some item and store wise the sales value or sold value, so you want to pick the store wise or column wise the values for the particular item. आपको आपको चाहिए ये वैल्यू ये पर्टिकुलर आइटम के लिए. इन दैट केस बी लुकअप, अब लगा बोलोगे मैं तो लगा सकता हूँ वैसे, इक्वल टू ये कौन सा सिलेक्ट कर लिया मैंने पूरा, एंड ये मेरा सेकेंड कलम पे फॉर स्टोर 1 सेकेंड कलम पे है. ओके, कॉमा 2 कॉमा 0. एंड आपके पास बहुत सारा स्टोर है, यू हैव मेनी मोर स्टोर्स. ओके, इन दैट केस सिंपली वन बाय वन वी लुकअप, सो आपको टाइम लग जाएगा वन बाय वन वी लुकअप. इन दैट केस यू कैन कॉपी सिंपली एंड पेस्ट हियर. ओके, कॉपी एंड पेस्ट हियर, कॉपी पेस्ट. अभी क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, लेट मी सी. ये तो सही है, बट you can see all the selected range are getting shifted. ये इधर से फर्स्ट वाला इधर से सिलेक्ट था, बट ये मूव हो गया. फिर सिलेक्टेड सेल, ये भी मूव हो गया. इन दैट केस ये देखो डाउन जाते जा रहा है, गोइंग डाउन. ओके, नाउ आई वांट टू फिक्स द रेंज in this way and this way as well. It will not move. In that case what I need to, even ये रेंज भी आपको चेंज हो रहा है, ये तो सही है. ये भी मेरे को कलम वाइज चाहिए, इससे नहीं हो रहा है. देखो, तो फॉर दैट आई एम यूजिंग VLOOKUP, then fix this one, fix with single dollar sign. ये मैं बाद में बताता हूँ क्यों किया मैंने. ठीक है, ये पूरा रेंज तो सेम रहेगा. fix, let fix this one, the total range, then कॉमा 2 के जगह मैं यूज करूंगा कलम, COLUMNS, columns, then again B6 to no A to B. ठीक है, A to B12
then comma 0, then bracket close, एंड इसको मैं करूंगा पूरा फिक्स्ड, फुल फिक्स, एंड बी इसको मैं करूंगा आगे फिक्स, कॉमा 0। सो अब देखोगे ये 20, तो इसमें क्या होता है आपका जो कॉमा, इसके केस में स्टोर 1 के केस में प्रीवियसली यू गिवन कॉमा 2, बट इस केस में क्या होता है स्टोर 2 के लिए आपको 3 देना पड़ता है, तो मैनुअली चेंज करना वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो एक ही फॉर्मूला में ये जो 3 रेंज है ना, मैंने इसीलिए कलम यूज किया। I used the column here just because of the reference. It will also move. Here you can see the column A and B selected. A and B. Okay. But here A to C it's changed. ये मैंने कलम यूज किया बोल के। ओके, एक्स लुकअप फॉर्मूला। सो एक्स लुकअप क्यों करते हैं, वी लुकअप, सपोज इन वी लुकअप यू आर having value right side and name left side, but x lookup अगर ये left में भी होगा, so you can pick the value, in that case equal to x lookup, then name comma the total names and the values. So fix the range for all, enter. You will get the value. So for transpose, you can transpose the data by formula. In that case, formula is transpose, then select the data range and bracket close. So you can see column wise data or row wise data transpose, like Jan, Feb data, and it's coming like Jan, Feb, column level to row level, and name row level to column level. And thank you for your participation. Thank you all. Bye.